So now we are going to discuss ordinary differential equation of higher order. Ordinary differential equation of higher order. There are no need to write anything, okay? I'll send it the PDF. Zahir, especially I'm telling for you. I'm Okay, sending sir. you the PDF and as well as recording of this class. So you need not to write anything. Okay, sir. So actually, what is the discussion in our class today? Higher order differential equation. So how we are going to find the solution of the differential equation which has the power more than one? It may be second order, it may be third order, okay? And now the general solution will be complementary function and particular integral. So just as a basic, I will tell you one example. Like your question will be like that: solve, like example, y double dash plus, क्या it's not your class, आपका class कौन सा? 2y dash मैं बोलता हूँ आपको जवाब 2y dash plus y इज इक्वल टू, वो कल का हो गया आपका कंप्लीट वो प्रॉब्लम। आपका जब ज्वाइन करना है आपको बोलता हूँ, ये आपका रिलेटेड ही नहीं है, तो फायदा क्या है? हाँ, कल का प्रैक्टिस करें। ये सपोज वी हैव राइट साइड वैल्यू विल बी 0, okay? So when right side value will be 0, we have to find out only the solution of this one. Like y double dash means we can also write this one as d square y by dx square plus 2 times y dash means we have to write like that dy by dx, it's a derivative, plus y is equal to 0. This is what y double dash and d square y by dx square. Then we have to write the operator form. Because it is a first class, so I am going to tell in detail. For the next problem onwards, I don't want to write in detail. The operator form is what the operator form, wherever small d by dx is there, small d by dx will be represented with a capital D here. So then the above equation will be writing in operator form is, this is d square, y I am taking common also, plus 2d, okay, plus 1 into y. I'm taking y common, is equal to 0. Yes. After writing the operator form, we have to write the auxiliary equation. Then we have to write the auxiliary equation here for this operator form. Auxiliary equation, how to find out? The way of finding auxiliary equation is, we have to just replace capital D with a small m. So then how it will be? How it will be, tell me? M square. Come on, give me the answer. M square Plus 2m plus 1. 2m plus 1. And when writing the auxiliary equation, we don't consider this y value and we don't consider whatever it is there in the right hand side. Right now we have 0. If we don't have 0 also, we should neglect them. And Okay, sir. equating to 0, there we'll get the second degree quadratic form. That is why it is called higher order differential equation. So now we are going to find the solution for this one. I can also write this one as m plus 1 whole square. No, you can read this one, it is of the form a square plus 2ab plus b square form. So I can write it Yes. as m plus 1 whole square. So it means we are getting two different factors, like m plus, not different, they are same. M plus 1 into m plus 1 is equal to 0. So then we say m plus 1 is equal to 0, m value is minus 1. And here also m plus 1 is equal to 0, m value is minus 1. Now we have to write down the complementary function.
This step I will tell you later because we have a table for this one. Let me do it one more question. Two more question will do it, and all together I will show you how to write their solutions. सबका solution एक ही बार लिखने का process बताता हूँ. Okay? Let us do it one more question. एक question number 1 solve हुआ अभी. Let us see the question number 2. इसका भी solution अभी नहीं लिखे अपन. I'll show you how we are going to write their solutions. This is question number 1 we have discussed. Now question number 2, different type of question like that. The question will be solve. How I am taking like that. D square y by dx square plus 5 into dy by dx plus 6 into y is equal to 0. These are the basic questions, okay? Only basic to understand the basic concept. LAQ तो इसमें से नहीं आता. LAQ के लिए आपको right side also we have some values, right? Yes, sir. I'll tell you that what are those values. Now solution. Solution means, unfortunately our question is already in standard form, so we should write their operator form directly. Operator form मतलब क्या? D by dx को capital D से replace करना. Directly I am writing d square Yes, sir. plus 5d plus 6, and all together I am taking y common also, is equal to 0. D square plus 5d plus 6 is equal to 0, correct? Now this form, operator form is done. Now we have to write the auxiliary equation. The auxiliary equation is how to do it? M square plus 5m plus 6 is equal to 0. After that we have to find out their factors. I can also split this 5m as 3m and 2m. Actually Yes, the sir. way of finding the factors is, what is the way? You have to multiply these two, that is 6m square. Now we have to search their factors, and those factors should satisfy two conditions. Condition number 1 is the sum should be 5m and their product must be 6m square. वो possible factors क्या हो सकते हैं? जिसका sum करे तो 5m आना है और जिसको multiply करे तो 6m square आना है. तो 3 and 2 होते ना? Sir, we can find this using calculator to write. Yes, you can find out, no problem. Choice is yours, but if you know, that's better. Sir. Choice is yours. M plus 3, and if you take 2 common here, we are getting one more time m plus 3 is equal to 0. So then what? If you take m plus 3 common, we are left with m plus 2 is equal to 0. Then m plus 3 is equal to 0 means we can get the value of m is minus 3, and here it is minus 2. Now both of the values are different. This is another case to write the complementary function. This also I'll tell you later on. Okay? एक पहला केस जिसमें रूट सेम थे, एक दूसरा केस जिसमें रूट्स डिफरेंट थे. now एक तीसरा केस ऐसा देखेंगे. ठीक है ना? फाजिला, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. एक आपके लिए मैं स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहा हूँ, देखिए, अदरवाइज मेरा कुछ और प्लान था आज. ठीक है ना? एग्जाम अच्छा जाना है आपका इंशाल्लाह. इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको ज़्यादातर पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पास पेपर को ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 जो पॉसिबल केस हो सकता है अपने पास, व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, उसके लिए क्या करेंगे? यस, वी शुड राइट अनदर क्वेश्चन हियर. सॉल्व d square plus 4 into y is equal to 0. Now look at everyone, what actually we are having? We are having direct operator form. क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देके
ऑपरेटर फॉर्म डायरेक्ट दे दिया है, so this problem will become easy for you because two steps is already solved. Now we should write the auxiliary equation directly. The auxiliary equation is, what is that? M square plus 4 is equal to 0, right? M square plus 4, if you bring that side, becomes what? Minus 4. Then M square minus 4 means I can also write it as 2i whole square. Why? Because 2 square is 4, I square value is minus 1, and you should remember that always the I square value will be minus 1. So then this minus 4 can be written as 2i whole square. Then this m is equal to, square will go that side, 0 plus minus 2i. So when you are getting the complex roots, complex ka matlab we are getting some imaginary part. This time we have to compare our roots are of this form, alpha plus or minus I beta से compare करेंगे. So then what do you say? Alpha is equal to 0, beta is equal to 2. Now there is another situation we are getting where we are getting the roots in a complex form. Okay, so case number 1, method number 1, actually this is the first question where we are getting the different, sorry, not different, same roots. Problem number 2, we are getting different roots. Problem number 3, we are getting complex roots. Okay, I will give you a table now so that you can understand for which one we have to write, how to write the solution. Let us see one table here. Maybe to understand the basic will take some time, but once you understand the basic, this chapter, this unit will become easy for you. Now look at. Now look at this. This is for roots. This is for solution. Roots and solution. Suppose the case number 1, what we have done here, actually the meaning of this is when two roots are same. मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? We are getting two roots and both of them are same. ये m1 की वैल्यू आई पहला रूट, m2 की वैल्यू आई दूसरा रूट, और दोनों भी सेम है. And the way of writing the complementary function, yc बोलेंगे इसको अपन, c1 e power, not e, c1 plus c2 of x into e to the power of, ये दोनों भी सेम है तो आप कौन सा भी लिखो इधर, m1x या फिर m2x, चॉइस इज योर्स. ये पहला हो गया आपका केस. नाउ लुक एट सेकंड केस. सेकंड केस में when they are different, it means like that, when m1 is not equal to m2, then the way of writing the complementary function is yc is equal to c1 e power m1x plus c2 e power m2x. और इसमें अगर और एक समझो, तीन रूट्स आते, m1 m2 m3, तीनों भी अगर डिफरेंट रहते तो एक और वहां पर एक आगे इसको कर सकते थे अपन, c1 e power m1x plus c2 e power m2x plus c3 e power m3x, like that. Now look at one more possibility. When the roots are in a complex form, like what we have done just now, alpha plus or minus I beta form में अगर रूट्स है, तो जाहिर समझ में आ रहा? Yes, sir. E power alpha x
C1 cos beta x plus C2 sin beta x. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. और एक पॉसिबिलिटी हो सकती, बट वो प्रॉब्लम मैं अभी आप उसके बात करूंगा, वो क्या हो सकता, विल सी दैट, यहाँ पे बता दूंगा पहले तो आपको क्या हो सकता है. There is a possibility that we are getting all the three roots are same. M1, M2, M3 all are same. Then the way of writing yc is equal to C1 plus C2 of x plus C3 of x square into e to the power of, ये पूरे सेम ही है, M1 M2, तो कोई भी एक लिख दीजिए आप यहाँ पर, mx M1 M2 M3 में से कुछ भी लिख सकते हो. और एक लास्ट फाइनल केस रहेगा when the roots are all the three, we are getting three roots and all the three are different again. M1 not equal to M2 not equal to M3. It means the way of writing complementary function yc we have done for 2. 3 के लिए देखिए, C1 e power M1x plus C2 e power M2x plus C3 e power M3x. Like that, this problem will be, sorry, not this table, this solution. अब आइए बात करते हैं यहाँ का सोल्यूशन क्या होता है. अब आप लोग मेरे को बोलिए, प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन बोलिए. कम ऑन. रूट्स आर सेम, which case we are now? C1 C2 के वैल्यूज कैसे है, क्या मान कैसे मालूम है? C1 C2 के ये वैल्यूज, ये बोल रहे हैं आप. C1 C2 ने M1 M2 है ये. हाँ वही C1 C2 के वैल्यूज कैसे मालूम है वही, M1 बिकॉज M2 C1 प्लस C2x है ना, कॉम्प्लीमेंट्री तो C1 सॉल्यूशन. C2 तो वही रहेगा, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा. देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा ओके हूँ इसका, ठीक है. देखो आप, C1 प्लस C2 हर C2x. जगह सेम ही रहेगा, इनटू ई पावर, ओके. वो तो सेम रूट, -1 कोई भी एक x. लिखिए, माइनस एक्स, खत्म हो गया इतना. C1 C2 अभी अपने ओके. को पता ही नहीं है. ये ओके ये ठीक. फाइंड आउट करने के लिए वो जो मेथड लगता है उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. वो नहीं लगता है यहाँ पर, इसको C1 C2 को C1 C2 ही रखना है आपको. ओके सर. हाँ, अभी आप देखिए डिफरेंट है. अब कौन सा केस होता? अभी यहाँ पर C1 e हाँ, पावर वेरी गुड. C1 e पावर 3 माइनस थ्री एक्स -3x प्लस प्लस C2 e C2 e पावर पावर माइनस टू -2x. एक्स. वेरी गुड. अभी आप बहुत जल्दी से समझ गए. यहाँ पर देखिए, ई पावर फार्मूला लिख देंगे पहले, ई पावर अल्फा एक्स, यही होता ना, C1 cos यस सर. बीटा C1 एक्स. cos beta x plus C2 sin beta x. Yes, I think you have idea about this one. This is equal to yc is equal to e power alpha value is 0. E power 0 is 1 now, so no need to Yes write sir. that. C1 cos beta is if you compare beta is 2, so C1 cos 2x plus Yes sir. C2 sin 2x. अभी अपने को ये C1 C2 को फाइंड आउट करने का नहीं है. C1 C2 Okay. ही रहेगा आंसर में. अब उसको Okay. फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड लगता है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे. इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं. उसके लिए जो मेथड है उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. Okay. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो देन आई कैन गो फॉर सम डिफरेंट क्वेश्चंस. अब जो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, जहीर, फाजिला, रमशा, ऑल 3, राइट साइड में 0 है. देखिए तीनों प्रॉब्लम में दिख रहा है आप लोगों को. Yes sir. हाँ, इसको बोलते हैं खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करते हैं अपन, सॉल्व रहेगा क्वेश्चन में. अब राइट साइड में जो Okay. केस 1 अराइज होगा, वो केस का नाम है राइट साइड वैल्यूज आर ई पावर एक्स. Okay. तो मेथड 1 में हो जाता. राइट साइड में अगर साइन एक्स और कॉस एक्स है तो वो मेथड 2 हो जाता. राइट साइड में अगर एक्स पावर एम है, मेथड 3 हो जाता. राइट साइड में ई पावर एक्स के साथ कुछ भी और दूसरा फंक्शन है तो मेथड 4 हो जाता. तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ मेथड 1 के, ठीक है ना. मेथड 1 भी करेंगे, मेथड 1 का केस ऑफ फेल्यूर भी करेंगे. अब
ओके सर, ये फर्स्ट प्रॉब्लम में ऑपरेटर फॉर्म इज डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी हाँ, एक्स, एक बार क्या है ये, एक बार समझ मिस अब कर अब दी अब मैं स्टार्टिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कर रहा हूँ ना मेथड 1 का, उसमें ये और क्लियर होता आप। ओके ठीक है, अब कर रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो अभी मैं लोगों को पहले बोल दिया था ऑपरेटर फॉर्म क्या रहता, तो अब हर प्रॉब्लम में आते रहता हूँ। अभी नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। जहीर एंड एवरीवन प्लीज रिप्लाई। अब आप जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम मेथड 1। Okay, sir. Fazila, you also reply। Yes, sir. मेथड 1। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन आप कैसा पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन मेथड 1 का ही है। मैं आपको हिंट देता हूँ। सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमारे अबरार मुस्तफा को कॉल करके फौरी क्लास ज्वाइन करो बोलिए। उनका रिवीजन बहुत सीरियस रिवीजन चल रहा, बोलिए कॉल करके बोलिए। गुस्सा कर रहे सर, जल्दी ज्वाइन करो बोल रहे, बोलो अदरवाइज इधर आ जाओ बोल रहे, बोलते बोलो। नहीं कॉल करो बोलो, नहीं तो अगर ऑन द वे भी है तो फोन पे जल्दी ज्वाइन करो बोलो, मिस हो जाता पूरा। सर इंस्टीट्यूट पे आप? जी हाँ। आप लोग को ऑनलाइन भी हो रही ऑफलाइन भी हो रही क्लास, यहाँ पर दो भी चल रहा है। समझ में आ रहा? किसी को भी मिस नहीं होना है अल्टीमेटली। जो घर से पढ़ सकते घर से पढ़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते, अब इस वक्त इंस्टीट्यूट में ही होंगे हम लोग, यहाँ पे से भी क्लास पढ़ रहे लोग। तो देखिए अब आप लोग आप बोलिए, मेरे को बोलिए मेथड 1 का क्वेश्चन है, बोलिए कैसा पहचानूंगा मैं। राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको? पिछले क्वेश्चन में 0 था, अभी क्या है? ई It is पावर about यस, ई पावर से जो भी रिलेटेड है। ई पावर से ई पावर -x हो सकता, ई पावर 2x हो सकता, कुछ भी हो सकता। ई है बोले तो राइट साइड में मेथड 1 सोल्यूशन। देखिए अब जो पूछे थे अभी मेरे से ऑपरेटर फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए दी ऑपरेटर फॉर्म इज। ऑपरेटर फॉर्म का मतलब जिधर भी डी बाई डी एक्स है उसको लिखना है कैपिटल डी। ठीक है, राइट। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यहाँ पर डी बाई डी एक्स की जगह पे डी कैपिटल डी लिखना, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाता बोलिए आप? ये डी स्क्वायर हो जाता ना। यस, वाई कॉमन भी ले yes, sir. लेंगे। समझ में आया आपको अभी जो पूछे डाउट? नहीं सर। देखिए ये डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स की प्लेस पे क्या लिख रहे हैं अपन? डी लिख रहे। कैपिटल डी लिख रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की प्लेस पे ऑटोमेटिकली क्या बन जाता वो? डी स्क्वायर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर डी स्क्वायर यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर लिखा तो इधर भी डी स्क्वायर ही हो जाता ना जी। यस सर, यस हाँ, अब समझ में आ गया अब सर। वाई कॉमन भी ले लिया मैं साथ में, एक स्टेप कम करके वाई कॉमन भी ले लिया। समझिए ना? अब ओके ये जो ओके। ऑपरेटर फॉर्म आया उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में नहीं सुने इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ मैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का वे क्या है? जहां पर भी कैपिटल डी है वहां पर स्मॉल एम से रिप्लेस करिए। क्या बोले ना जय, क्या बोले अबरा? तो कैपिटल डी विल बी रिप्लेस विद स्मॉल एम। So what is this becomes now? Tell me, m square. एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इंटू वाई। हाँ, ये भी एक लॉजिक है, देखिए इज इक्वल टू 0। जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं we have to neglect this y, we have to neglect this right hand side value, we have to assume that it is 0, then only we can ओके find out the auxiliary equation। ठीक है, ओके ओके। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए y टर्म को और राइट साइड वैल्यू को 0 अज्यूम करना। नाउ वी हैव टू टेक देयर फैक्टर। अब ये फैक्टर के लिए आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज करो, आपका मर्जी है, आप चाहे तो मैनुअल करो, आपका मर्जी है, आप जैसा फॉर्मूले से भी करना है आपका मर्जी है। तो व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स? 3m and am। फैक्टर्स के लिए कंडीशन क्या रहती? इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स यू विल गेट दिस मिडिल टर्म, इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स दिस इज कॉल्ड टोटल टर्म, so if you multiply these two you will get this one। so
Is these two factors satisfying both of the conditions? Yes, sir. Yes. So 4m can be written as 3m plus m plus 3 is equal to 0. M common. M plus 3 left off. Plus 1 common. M plus 3 left off is equal to 0. Then m plus 3 we take common again. The left off term is what? M plus 1. M plus 1 equal to 0. So can you tell me what are the values of m we are getting now? Minus 3 and minus 1. Both are different now. Yes, sir. Minus 3 and minus 1. We're Now, getting just case now we 2. have shown which case we are now. Second case, C1 आ जाओ इधर आ जाइए power x. मुस्तफा यहाँ पर बैठ के सुनो बुक ले लो. So the way of finding complementary function is different है ना रूट्स. बोलो सब Yes, लोग sir. बोलिए क्या हो सकता C1 C1 e power x plus C2 e e power power minus x. 3x Okay. plus C2 C2 e to e the power power of minus x. minus x. ये हो गया आपका yc. Now moving to the yp value. Yp is equals to 1 by, देखिए 1 by क्यों, ये जो y वैल्यू को मैं राइट डाला, ये y वैल्यू के लिए सोल्यूशन लिख रहे हैं अपन, ये सोल्यूशन इन टर्म्स Okay. ऑफ y. ये y वैल्यू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिए, ये y वैल्यू के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख रहे. सोल्यूशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करना रहता, ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करना रहता. ज्वाइन भी हो सकते हैं आपकी मर्जी, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिखना. तो जो इसकी yp वैल्यू होना तो ये मल्टीपल टर्म्स को डिनोमिनेटर में ला लेंगे, d स्क्वायर प्लस 4d Plus 4d plus 3. प्लस 3 इंटू e पावर 2x, राइट. Okay. अब क्या रूल है देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज x कोएफिशिएंट हियर, 2. दैट वी हैव टू रिप्लेस इन प्लेस ऑफ d. जो भी x कोएफिशिएंट है वो d की प्लेस पर रखना है. Okay. So then what is the answer? 1 by 4 1 by plus 2 square is 4 plus 4 3 is 12. plus 8. Sorry, 8 na, Yes. 4 Plus to the 8 8 plus 3. plus 3 into e to the power of 2x. Then what is the answer? If you add these two, 15. 1 by 15. that's it. Yp is equals to 1 by 15. 1 by 15 into e power 2x. So Yes, sir. therefore, the general solution is y is equal to complementary function plus particular integral. So y is equal to complementary function we are getting as, यहाँ पर है देखिए इसका आंसर ऑलरेडी, c1 e power minus e 3x power minus 3x plus plus c2 e power c2 minus e x. power minus x plus yp वैल्यू कितना आ गया, 1 by 15 e 1 power by 2x. 15 into e power 2x. ये आपका फाइनली हो गया है इसका सोल्यूशन. इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते एग्जाम में, ठीक है. और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. कॉम्प्लिकेटेड मैं तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा. हो सकता है कि आपको एक ऐसा केस आए जिसमें डिनोमिनेटर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे d की वैल्यू, यहाँ पर जैसा अपन सब्स्टिट्यूट करें, डिनोमिनेटर इमीडिएटली अगर 0 हो जा रहा तो कैसा सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक प्रॉब्लम लेता हूँ. उसके बाद देखिए हर सेशन के बाद अपने को एक 10-15 मिनट गैप देना पड़ता. ये जूम में क्या है, कंटिन्यू क्लासेस को अलाउ नहीं करता हूँ. फिर Okay, sir. आप लोग कहीं भी बिजी हो गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. आज मैं पूरा दिन खाली हूँ, तो जितने मैक्सिमम सेक्शंस मैं ले सकता हूँ जब तक मेरा लैपटॉप चार्जिंग है विल बी कंटिन्यू. अदरवाइज चार्जिंग पे लगा के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ द मेथड 1 वी आर डिस्कसिंग. क्वेश्चन है सॉल्व
d cube minus 5d square plus 8d minus 4 into y is equals to e power 2x. Yes. मुस्तफा मुस्तफा 1 सेकेंड. आप कैसा पहचानेंगे? ये मेथड 1 का ही क्वेश्चन है, कैसा पहचानेंगे आप? ई पावर कुछ भी रहा तो मेथड में हाँ, यस, ई ई पावर पावर का एक्स जो भी है, राइट. तो सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा? अभी आपको मैं कंप्लीट आइडिया दिया ऐसा तो मेरे को लग रहा. जाहिर, कैन यू टेल मी जाहिर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर ये ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है सर. वेरी गुड, एक्सेलेंट. द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज जाहिर, आर यू कंफर्टेबल नाउ? m क्यूब यस सर. माइनस, मतलब मैं ऑनलाइन क्लास में कंफर्टेबल की बात करूं, बाकी जो भी अदर स्टूडेंट है उन लोग को हैबिट है, पढ़ रहे हैं लोग, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए पूछा मैं. हाँ क्लियर है सर. यस. m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 इक्वल टू 0. अभी तक अपन जो सॉल्व कर रहे थे उसका पावर 2 था. एक क्वेश्चन में लिया जिसमें पावर 3 भी आ रहा, ठीक है ना? तो देन हाउ टू सॉल्व इट? m क्यूब के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पर? अगर पावर मोर देन 1 है, 2 है, 3 है, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन मेथड. मतलब क्या है? ट्रायल और एरर मेथड से m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना सोल्यूशन. लाइक एग्जांपल, if you put m is equal to 1, what happened? If you put m is equal to 1, what happened to this above equation? It's a 1 minus 5 plus 8 minus 4. Minus 5 minus 4 together becomes minus 9. 8 plus 1 together becomes 9, means m is equal to 1 will satisfying the above equation. It means we say that m is equal to 1 is one of the solution. It means we can apply synthetic division method here. सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? वो जो सोल्यूशन आपको आया उसको यहाँ पर लिख देना है, एंड देयर कोएफिशिएंट वी हैव टू राइट. इसका कोएफिशिएंट m क्यूब का 1 है, m स्क्वायर इज माइनस 5 हियर, m के लिए वी हैव 8 हियर, एंड फॉर दिस वी हैव कांस्टेंट माइनस 4. और वेरिफिकेशन क्या होता है? इधर माइनस 4 है तो इधर प्लस 4 आता, कैसा भी. देखो वेरिफिकेशन. नाउ रूल इज, फर्स्ट टर्म वी हैव टू ऐड एज 0. 1 plus 0 is 1, 1 ones are 1, and adding minus 5 plus 1 is minus 4, minus 4 ones are minus 4, and 8 minus 4 is plus 4, 4 ones are 4. You can see we are getting the last term will be 0. मतलब अपन हायर ऑर्डर में से एक पावर को कम कर दिए. What the left of is the coefficient of m square minus 4m plus 4 is equal to 0, right? So then what do you say it is? It is the expansion of m minus 2 whole square is equal to 0. m minus 2 whole square का मतलब क्या होता? m minus 2 into m minus 2 equal to 0. It means totally how many values of m we are getting? Can you tell me? एक तो पहले आ गया M था m is equal to 1 आ गए थे, 1 है, और अब ये 2 आ दोनों गया. से सेम आ गए. मतलब टोटल 3 रूट में से एक डिफरेंट आ रहा, 2 सेम आ रहे. तो yc कैसा लिखते देखिए, डिफरेंट को डिफरेंट स्टाइल में लिख दो, c1 e पावर 1x. अब ये दोनों सेम है, दोनों को मर्ज कर देंगे. एक वेरिएबल c1 आ गया तो अब c2 c3 से मर्ज करेंगे, c2 प्लस c3 ऑफ x इंटू ई पावर 2x. आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, c1 प्लस c2 ऑफ x ई पावर 2x लिख के ये c3 ई पावर 1x को अलग कर सकते हैं. एक चॉइस आपके पास है. नाउ फाइनली वी कैन गो फॉर yp. 3 मिनट से ये प्रॉब्लम को खत्म करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाता. ये सेशन खत्म होता उसके बाद कंपलसरी थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज जूम में ना कंटिन्यू क्लासेस अलाउड नहीं रहते.
अब ये मीटिंग खत्म, इमीडिएट नेक्स्ट नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता। नाउ yp is equals to 1 by d cube minus 5d square plus 8d minus 4 into e power 2x. So if you apply the rule, what is the rule? Put d is equal to x कोफिशिएंट क्या है भाई यहाँ पर 2 है, 2 ऐसा रखते कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा, देखिए क्योंकि 2 अपने पास एक फैक्टर है उसका, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो इसको बोलते हैं केस ऑफ फेल्यूर। डिनोमिनेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से, सॉरी डी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा तो केस ऑफ फेल्यूर बोलते हैं। उसको कैसे सॉल्व करना? yp is equal to whenever it is failed we have to write the possible factors। इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, देखिए d माइनस 1 एक हो सकता, क्योंकि d एक रूट आया था अपने को यहाँ पर, ये d माइनस 1 एक होता, और एक होता d माइनस 2 होल स्क्वायर। सही है? बिकॉज ये टू टाइम्स आया बोल के या यस 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, d माइनस m की जगह d रिप्लेस करें तो d माइनस 2 होल स्क्वायर एक होता, ये d इज इक्वल टू 1 मतलब d माइनस 1 एक होता। दैट्स व्हाट। ओके ओके, अब इसमें से क्या होता, ये दो फैक्टर में से एक फैक्टर फेल होता, वो ये है, ये वाला फेल हो जाता। अगर आप d वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते कि d वैल्यू 2 करते कि इन्हें फेल हो जाता, मतलब 0 हो जाता, तो 1/0 इंफिनिटी ऐसा केस अराइज नहीं होता। यहाँ पर क्या करना पड़ता आपको, ये फेल नहीं हो रहा ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना 2 माइनस 1, और जैसे ही जहां पर भी ये फेल हो रहा इनटू, फेल होते कि उसका पावर क्या है 2 है, सो वी राइट एज x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ये रूल है केस ऑफ फेल्यूर का। ये हो गया आपका yp वैल्यू, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस करेंगे जहां पर फेल हो रहा ना, पावर देख के x पावर अगर 1 है पावर x पावर 1 by 1 फैक्टोरियल। सो फाइनली इसका आंसर आता x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, x स्क्वायर e पावर 2x by 2, दिस इज योर yp वैल्यू। therefore you have to write the general solution, the general solution is, ऐसे लिखते हैं आप y is equal to yc is equals yc कॉम्प्लीमेंट्री plus फंक्शन yp प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो yc की वैल्यू आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, एज इट इज लिख देना है, yp की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, एज इट इज लिख देना है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए मेथड 1 से, एक में केस ऑफ फेल्यूर हुआ, ठीक है, और एक में जहाँ पर केस फेल नहीं हो रहा, वे गेटिंग द आंसर, ठीक है। अभी एक और नहीं, और आई टेक मोर सेशंस टुडे, बट अभी एक क्लास को यहाँ पर खत्म करना पड़ता, जूम में कंटिन्यू क्लास अलाउड नहीं है, थोड़ा ब्रेक देके फिर कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके ठीक है ना, ओके। डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अनदर सेशन अगेन।